Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लेकर आए हैं और इन बारे में हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Domestic stocks climb more than 0.5%. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty reclaims 17,900 level. Rupee strengthens 19 paisa against the US dollar. Global stocks trade mixed and Brent crude prices rise to trade above $80 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स फिर से 60,000 के स्तर पर, निफ्टी ने 17,900 का स्तर दोबारा किया हासिल। रुपए में डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की मजबूती। वैश्विक शेयर बाजारों में मिलाजुला कारोबार और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $80 प्रति बैरल के पार। शुरुआत शेयर बाजार की खबरों से करते हैं। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.5% से अधिक का उछाल दर्ज हुआ। सेंसेक्स फिर से 60,000 के स्तर पर जा पहुंचा और निफ्टी ने 17,900 का स्तर दोबारा हासिल कर लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 367 अंक के उछाल से 0.61% बढ़कर 60,223 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.67% की वृद्धि से 120 अंक ऊपर 17,925 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.36% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.08% के मामूली नुकसान में रहा। The Sensex and the Nifty today climbed more than 0.5% in the afternoon trade. Both stocks extended gains amid mixed global cues. The Sensex regained the 60,000 mark while the Nifty reclaimed the 17,900 level. The BSE Sensex climbed 367 points or 0.61% to trade at 60,223. The NSE Nifty added 120 points or 0.67% to trade at 17,925. In the broader market at BSE, the mid-cap added 0.36% while the small-cap index fell 0.08%. In the Sensex pack, shares of 18 companies climbed while 12 slipped. Bajaj Finserv was top gainer as it climbed 5.1%, followed by Bajaj Finance, which gained 4.4%. Kotak Bank added 3.7%, Axis Bank surged 2.6%, and Tata Steel ended 2.5% up. On the other side, Tech Mahindra tumbled 2.9% and Infosys plunged 2.7%. HCL slipped 1.7%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors gained. BankX was the top gainer as it gained 2.4%, followed by Finance, which rose 1.9%.
On the other side, IT plunged 1.9% and tech declined 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,786 companies gained while 1,606 fell. Shares of 89 companies remained unchanged. And now we have online with us Mr. A.K. Bhattacharya, the Editorial Director of Business Standard. Mr. Bhattacharya, welcome to the program. Thank you very much. Thank you. Mr. Bhattacharya, we see that it has been a good start to 2022 so far as the Indian markets are concerned. Now, despite the fact that the Omicron variant is spreading so fast and numbers of COVID infections are rising so quickly, what are the factors that are contributing to this bull run of the markets? Well, I would not classify it right now as a bull run. Hidden under the overall direction and the trajectory of the stock market, the indices, there is a strong sense of volatility in the market. As you saw even in today, the markets actually initially plunged and then they recovered. Yes. So what is really happening is the market is playing sideways in a sense that in some sectors, given the nature of the earnings season that will unfold in a few days from now, which is we start getting the corporate earnings results of Q3 of the current financial year, and the assessment of the market on how serious and how severe can the Omicron outbreak be for the pace of economic activity in large number of the large sector, many sectors of the economy. But it is a fact that the markets have gained some sort of a new resilience, I would say. But I would reserve my comment on whether this is a bull run or is this an appreciation in the market that is given that is an outcome of differing assessment of how Omicron will play out in the coming weeks. जी भट्टाचार्य जी, अगर आज के कारोबार पर हम नजर डालें तो आज आईटी स्टॉक्स पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है बिकवाली का। जो एक तेजी का जो रुख था आईटी स्टॉक्स में, उसमें अब कहीं ना कहीं एक विराम लगा है। ये सेलिंग प्रेशर इस पे दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे क्या आप वजह देख पा रहे हैं? देखिए, जो आईटी सेक्टर ही नहीं, सिर्फ आईटी अगर देखें, फार्मा सेक्टर को देखें या इवन पावर सेक्टर को देखें, ये सब कुछ डिमांड के ऊपर ये डिमांड लिंक्ड है। आईटी सेक्टर में जिस तरह से जो आईटी स्टॉक्स जिस तरह से पहली दो तीन महीनों में हमने जो उछाल देखी थी, उसके बाद इसको मेंटेन शायद ये नहीं कर रख रही है। और ओमिक्रॉन के जो प्रकोप जो आएगा, उसमें सर्विसेज सेक्टर ज्यादा उसको चोट लगने की डर है। तो मैं समझता हूं आईटी सेक्टर उसी की जो नर्वसनेस जो है को दर्शा रहा है। उसी तरह फार्मा सेक्टर में भी आपने देखा कि आज नीचे आया है, पावर सेक्टर में भी नीचे आया है। हालांकि ऑटो, फाइनेंस, बाकी जो सेक्टर जो फाइनेंस पर्टिकुलरली ने अच्छा नंबर्स दिखाए हैं आज। Mr. Bhattacharya, though, of course, you've mentioned strong volatility and your reserving comment on the good start to 2022, the bull run. But the point, what are the factors? If we take into account what you're saying, then what are the points of concern or things or events to watch out for that will impact the markets in the coming days? Three things to be precise. Number one is the nature of the corporate earnings that one will start seeing from next week onwards. That will be supplemented by the kind of economic growth scenario that the GDP numbers that will be available this Friday. So both the corporate earnings as well as the GDP numbers will determine the trajectory and the nature of the stock market's trajectory in the coming days or weeks. That's number one. Number two, how the Omicron plays out in the next few days or weeks
and that will be keenly watched. That will be another big trigger. If indeed Omicron becomes a highly contagious disease, but without the seriousness of it associated with the second wave, then probably the market will react in a different way. But if it is just contagious and if it is not serious, markets will move in a different direction. And the third element would be the budget, which will come at the end of this month, which is the 1st of February. I mean, not this month, but 1st of February, which is just about 3 weeks from now. So all those three factors are probably influencing in a direct as well as an indirect way the stock market movements that we have seen in the last 2-3 days. जी, चर्चा जारी रखेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंच में आप सभी का फिर से स्वागत। बात घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन की करें तो आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19% की गिरावट से 96.06 पर कारोबार कर रहा था। Mr. Bhattacharya, here we would like to have a small comment, your comment on the way the dollar has been, behaving in the last few days. It has jumped to a 5-year high versus the yen. What does it tell, what does it indicate overall for the economy of the world economy, and how will it impact the Indian markets? I think for the global economy, it reflects the nervousness which has been marked ever since the Omicron variety of COVID-19 has spread very fast in Europe as well as the US. That is certainly one clear sign of why you see this nervousness in the dollar value. Coming to the Indian scenario, I would say that India's strong exports performance and the possibility that if Omicron does adversely impact the pace of economic activity, the oil prices may not go up as much as it was earlier feared, because the OPEC countries decided not to increase their output in spite of US prodding. So on the one hand, you have a weak dollar because of the nervousness in the US market, with inflation scenario being what it is. And the second is the oil prices may not go up very much. And the third is the strong exports performance of India. We all have contributed to Indian rupee getting stronger. As a matter of fact, today the Indian rupee actually appreciated by around 19 paisa or so against the US dollar. So I see this is directly linked to those three developments which I just now cited. Let's move on to the international markets. Let's hear it from Vishal about what happened in the Asian markets today. जी अनुभा, एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के उच्च प्रतिफल का असर विश्व की टेक कंपनियों पर पड़ा है और येन के मुकाबले डॉलर 5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल के मध्य तक ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है। हांगकांग का हैंग सेंग 1.6% आज लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% और चीन का शांघाई कंपोजिट सूचकांक 1% की गिरावट में रहा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की गिरावट, जबकि जापान का निकेई सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो यहां भी अंतर्देशीय कारोबार में बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 100 0.2%, फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.7% की बढ़त के साथ
कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US markets, the Dow hit a record high yesterday, boosted by banks and industrial stocks as worries about the Omicron variant of the coronavirus subsided, while a fall in heavyweight technology stocks dragged the S&P 500 and Nasdaq indexes lower. The Dow Jones Industrial Average added 0.6%, while the S&P 500 slipped 0.1%, and the Nasdaq Composite Index fell 1.3%. Mr. Bhattacharya, here I would like to talk to you about the US Fed's December policy meetings minutes, which are out today, which are due today. What are your expectations? What is it that we can expect from these, from the Fed? Well, I think given the situation that obtains right now in the U.S. economy, as also the inflation scenario and the rapidly spreading Omicron variant of COVID-19 and the number of number of cases that have been detected in these countries, my reading is that the Fed's earlier warnings on a gradual phase out of the bond purchase program, the unwinding, so to say, will probably be staggered over a longer period of time. That is number one. Number two, the earlier fear, so to say, that the interest rate will start gradually inching up from March onwards, that schedule or a timetable will also probably be subjected to a further review, given the fact that COVID-19 has not yet left the world, in a sense that it is still continuing to cause grave concerns on the prospects of the global economy. So therefore, I would say that not just the Fed, but even the Reserve Bank of India's own assessment of how it should play out the interest rate policy, how it should give guidance to the interest rate stance. My sense is that the earlier, assessments will undergo further review, and the earlier timetable decided for unwinding as well as the interest rate increase will have to be postponed to such a time when the Omicron variant's impact on the economy, global economy as well, is further under control. जी भट्टाचार्य जी, एशियाई शेयर बाजारों में जो आज गिरावट देखी गई है वो क्या बताती है कि उसको हम किस संदर्भ में देखें? नर्वसनेस है बहुत, जो ओमिक्रॉन, और एक तरफ ओमिक्रॉन है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का एक डर है, और तीसरी तरफ जो ग्रोथ का जो एक टेपेड वॉलेटिलिटी जो है ग्रोथ के ऊपर, कई मार्केटों में अच्छा काम दिखा रहे हैं, दूसरे मार्केट में नहीं दिखा रहे हैं, तो उसी का जो हम देख रहे हैं कि मार्केट नर्वस है। ग्रोथ अगर थोड़ा बहुत पहले से आगे भी आ जाए, पर लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का जो डर है वो बढ़ने की हम आशंका कर सकते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ मार्केट का एक जो इंडिकेशन हमें दिख रहा है। Mr. Bhattacharya, you earlier mentioned the upcoming budget, which is going to be announced on February 1st. Now, given the fact that the direction of the economy is impacted to a large extent by the budget, what comes out in the budget, what is your wish list from the finance minister? I mean, what are the points that you think the finance minister will keep in mind this year? Well, the union budget is a very important document that is released every year, once a year, and 1st of February is the date for that. My sense is that this year's budget will be critically important in terms of the kind of the direction the government wishes to give in alleviating the blow that COVID-19 had dealt to the various sectors of the economy, particularly the services sector, and to what extent the fiscal policy is used to incentivize increased
consumption in the economy, which holds the key to reviving growth in the medium to long term. Remember that the economy runs on two wheels largely. One is on investment, which the government is doing its best within its budgetary constraints by raising and spending more on the capital side. But on the demand side, the consumption side, there is no sign that the consumption recovery has taken place as yet, given the state of the various segments of the economy affected by the COVID-19, and this Omicron variety will once again hit the services sector more, yes, which will affect demand. So therefore, budget will be critical from that point of view, what it does to revive demand and what it does to provide this kind of relief and succor to the segments of our economy which have been badly hit by COVID-19. We'll continue with the program and the discussion after this short break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर से स्वागत। हम बात कर रहे थे बजट से उम्मीदों को लेकर के और बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। भट्टाचार्य जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि बजट में हमेशा कई सालों से सरकार हर साल विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करती है और चालू वित्त वर्ष की जो तीसरी तिमाही भी समाप्त हो गई है, लेकिन इस बार जो 1.75 लाख करोड़ का जो विनिवेश लक्ष्य सरकार ने रखा था वो कहीं से भी हम उसको छू नहीं पा रहे हैं और केवल 9,300 करोड़ रुपए का ही हम लक्ष्य हासिल कर पाए हैं अभी तक। यानी कि अब सारी उम्मीदें देखी जाए तो बाकी इस बचे हुए वित्त वर्ष में जो है, जो भी एक तिमाही बची हुई है, वो यही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की लिस्टिंग पर टिकी हुई है। तो ये पिछले साल भी जो है करीब 2 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था सरकार ने, लेकिन केवल 32,845 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। तो क्या आपको लगता है कि विनिवेश रणनीति के लिहाज से क्या सरकार को कुछ दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए अपनी रणनीति पर विनिवेश? नहीं, मैं यह नहीं सोचता कि पूंजी विनिवेश की नीति का पुनर्विचार करना चाहिए, पर जरूर पूंजी विनिवेश करने की जो प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को और भी किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, किस तरह से कामयाब किया जाए, बनाया जाए, इसमें जरूर पुनर्विचार होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो पूंजी विनिवेश की जो एक लक्ष्य रखा जाता है बजट में, वो बजट की फिस्कल डेफिसिट जो घाटा होता है, घाटा पूर्ति के लिए नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पूंजी विनिवेश जो एक हमारी जो सरकार की जो नीति जो है, जो निजीकरण की जो नीति है, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाना चाहिए, न कि बजट के नंबर को जब आकलन करने के बाद जो घाटा दिखा, वो घाटा को कम करने के लिए वो 3-3.5% GDP के लाने के लिए या 4% लाने के लिए FRBM एक्ट में मैं समझता हूं कि उस लक्ष्य को हमें और भी जरा रिफाइन करना है, रिवाइज करना है, कि इसीलिए वो प्रक्रिया को जो और भी हमें जो सुदृढ़ करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि पूंजी विनिवेश की जो नीति जो है वो सही है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जीवन बीमा के बारे में बात हो रही है, वो मैं समझता हूं कि वो उसमें अगर जीवन बीमा की जो IPO अगर हो सके तो उससे काफी पैसे भी आएंगे, सरकार के पास काफी पैसे आ जाएंगे, पर ये पैसे एक नीति के जरिए आने चाहिए, ना कि फिस्कल डेफिसिट जो घाटा को कम करना है तो पूंजी विनिवेश करना चाहिए। ये जो एक दृष्टिकोण है, मैं समझता हूं उसकी पुनर्विचार होनी चाहिए, ना कि पूंजी विनिवेश नीति की पुनर्विचार होनी चाहिए। जी, और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि विनिवेश से जो पैसा सरकार को मिल रहा है उसका व्यय कहाँ पर हो रहा है? ये भी एक बहुत पुराना एक तर्क की विषय है, उसका व्यय कहाँ हो रहा है। एक समय में ऐसा भी था कि उस पैसे को नेशनल रिन्यूअल फंड में ही
उसका व्यय किया जाए, पर वो आइडिया आया था, पर 2003-4 में उस आइडिया का भी विसर्जन हो गया था। मैं समझता हूं उसके बारे में भी एक पुनर्विचार या चिंता का समय आ चुका है। Let's move on to commodities. Oil prices today logged gains of around 0.5%. Brent crude rose to trade above the $80 per barrel mark. Brent crude was trading around $80.40 per barrel, while WTI crude prices were at $77.30 per barrel when reports last came in. Mr. Bhattacharya, we were discussing the oil prices earlier. Now, a few weeks ago, we saw that prices had gone down to up to $76 a barrel, but now we see they are again going northward, especially, after the OPEC Plus has decided to stick to the limited increase in global oil supplies. Now, that is a red flag for the Indian economy. Well, yes, if it stays at this level, it will cause some pressure on the retail prices or the government finances, because right now the government will maybe under pressure to keep the retail prices under check. Elections are coming, so that will certainly be, both politically as well as economically, will be a challenge. But my reading is that the oil prices will not go very much beyond $80 mark, for the simple reason that there is a demand slowdown in the offing because of the Omicron variety doing all kind of things in the developed markets. So I am not too worried about the adverse impact playing havoc with the Indian economy's stability or recovery path. You were saying that, of course, that you don't see the, prices going up, but the OPEC doesn't seem to, because OPEC countries seem to think that the Omicron will not have much impact on the economy, and that's why it's decided to stick to the limited increase. So obviously they feel that, they can limit the supply and therefore, the prices and also control the prices. Well, you are absolutely right. The OPEC member countries are worried that if there is a consumption slowdown of crude oil globally because of Omicron variety, and if they increase the production, then there will be a double whammy, there will be a double blow for their market and the prices. So which is why they are becoming very conservative. They are staying on with their earlier promised increase in the oil production. They are not going beyond that. Which is why the oil prices are remaining at this level. So, but if the Omicron variety, the manner in which it is played havoc with the demand side of the economies in various countries, I don't see that there will be a sharp demand once we are, we get into the months of February or so, and March, when the demand for oil also comes down because the winter is behind us. I don't see that kind of major problem affecting the Indian economy. जी, और अब बात गोल्ड की करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के मूल्य में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 47,910 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मार्च अनुबंध वाली चांदी 95 रुपए टूटकर 62,130 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,817.20 प्रति औंस पर, जबकि चांदी मामूली नरमी से $23 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in the program. So it's time to say thank you and bye to our guest, Mr. A.K. Bhattacharya. Thank you so much for joining us on the program. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks climb more than 0.5%. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty reclaims the 17,900 level. Rupee strengthens 19 paisa against the US dollar. Global stocks trade mixed, and Brent crude prices rise to trade above $80 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Anuha Rock and Vishal saying bye-bye. Namaskar.
बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra.